Namaste. Welcome back to my YouTube channel eEducator. As in this YouTube channels, you will find the solutions of a social science textbook of standard 8, 9 and 10. As in these videos also we are going to discuss standard 9, lesson 2, First World War and Russian Revolution. Chapter number 2, First World War and Russian Revolution, textbook exercise. Later on, objective videos also uploaded here. In this video we discuss about textbook exercise. Previously other chapters videos are only uploaded in YouTube channels. You can see in the playlist of a channel. Go to the playlist, find the playlist of standard 9 and you can have the videos. Even you can also find those videos in this description box. Check it there, description box, you can find the link there. So if you have not subscribed the channel, subscribe and share with your friends. The video is very helpful to write the textbook exercise. आपको ये वीडियो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज लिखने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा. अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए तो ओके और आपके फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए. ओके, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशंस, नॉट वेस्टिंग टाइम मच मोर. ओके, लेसन नंबर 2, रशियन रेवोल्यूशंस. ओके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन रेवोल्यूशंस. हियर answer the following question point wise. Questions point wise. Point wise here means a long answers. ये जो हो गए यहाँ पर लॉन्ग आंसर आपको मिलेंगे. लॉन्ग आंसर पॉइंट वाइज है, ये लॉन्ग आंसर मिलेंगे आपको. सो डिस्कस द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनीज इन वेस्ट यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका. ओके, सो आंसर पॉइंट नंबर. ओके, while writing the answer of a social science, long answer or short answer, you write the answer a point type, point wise. Always write the answer point wise while writing in the notebook or while writing into the answer sheet or in exams here. आपको आंसर पॉइंट वाइज ही लिखने से. ओके, मैंने यहाँ पर ऐसे जो बुलेट्स किए, बुलेट्स की जगह पर आप ऐसे डैश भी कर सकते हो. जो टेक्स्ट बुक के अंदर नोटबुक के अंदर जो मार्जिन दिया जाता है, नोटबुक के मार्जिन के अंदर आप डैश कीजिए, ये बुलेट्स कीजिए एंड राइट द पॉइंट्स, बट डू नॉट राइट देम इनटू द पैराग्राफ हियर. वी always write the answers in a point wise and your handwriting must be neat, clean and legible here. So if you do not have the kind of a good handwriting, do the practice. It will very helpful for the 10th standard board examination. So you do the practice of handwriting. If you have if you do not have the good handwriting, आपके handwriting दूसरों को समझ में आने से वैसे तो होने ही चाहिए. Okay, so improve your writing with the writing practice, and while writing in the answers in a notebook, you make sure that you will write the answer a point wise. Point wise लिखोगे आपको रीडिंग के लिए भी सही अच्छा सही रहेगा और जो एग्जाम के अंदर भी लिखोगे तो वो भी सही रहेगा. सो वेस्टर्न यूरोप, एशिया एंड अफ्रीकन कंट्री के अंदर कॉलोनियलिज्म का एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ. डिस्कस द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनीज इन वेस्ट यूरोप, एशिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज हियर. सो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एस्टेब्लिश देयर कॉलोनीज इन देयर नेबरिंग कंट्रीज एशिया एंड अफ्रीका. वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री जो यूरोप के अंदर जो वेस्टर्न डायरेक्शन के अंदर जो कंट्रीज आती है, ओके, वेस्टर्न डायरेक्शन के अंदर जो कंट्रीज आती है, दैट कंट्री लाइक इंग्लैंड, ओके, फ्रांस, इटली, ये जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, उन्होंने हाउ दे एस्टैब्लिश अ पावर ओवर एशिया, अफ्रीका और दूसरी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री के अंदर भी उन्होंने अपना पावर एस्टेब्लिश किया था. वहाँ पर कैसे किया? सो दैट वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज देयर कॉलोनीज इन देयर नेबरिंग कंट्रीज एशिया एंड अफ्रीका. सो कॉलोनियलिज्म इन वेस्ट यूरोप, ये अलग से एक पॉइंट रहेगा, इसको अलग कलर करना रह गया है. colonialism in a west Europe, how western Europe, जो western Europe जो था उसके अंदर how they establish a power, how western European country जो establish a power in western countries, western European country के अंदर उन्होंने कैसे वहाँ पर कॉलेज बनाई, कहाँ कैसे वहाँ पर उन्होंने अपना पावर एस्टेब्लिश किया, कौन सी ये जो कंट्रीज थी वहाँ पर दिखे. So Spain had taken control over Netherlands, Belgium and Luxembourg. Look, Spain जो कंट्री था, स्पेन ने कहाँ कंट्रोल किया? स्पेन, यू सी द वर्ल्ड मैप, आप वर्ल्ड मैप देखिए,
आपको नेदरलैंड कहाँ पर है, लग्जमबर्ग कहाँ पर आता है, ओके, बेल्जियम कहाँ पर है, स्पेन, इंग्लैंड, ओके, अफ्रीकन कंट्रीज, ओके, एशियन कंट्री आपको याद होनी चाहिए। सो स्पेन जो था, स्पेन है टेकन कंट्रोल ओवर द नेदरलैंड, नेदरलैंड के ऊपर उन्होंने कंट्रोल किया। बेल्जियम, लग्जमबर्ग उन्होंने कंट्रोल कर लिए। कि पोर्टुगल केम अंडर द रूल एंड स्पेन किंग। जो पोर्टुगल जो था, पोर्टुगल का जो राजा था, उसकी डेथ होने के बाद जो पोर्टुगल था वो स्पेनिश किंग के अंदर आ गया। सो पोर्टुगल भी जो था वो स्पेन ने ले लिया। Italy and German state become the victims of Great France and Austria. So इटली और जर्मनी के थोड़े पार्ट थे, वो भी फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया के, ऑस्ट्रेलिया नहीं है देखिए, पर ऑस्ट्रिया, यूरोपियन कंट्री ऑस्ट्रिया, okay, they had control some parts of Italy and Germany. Now colonialisms in Asia, how the colonies were established in Asia. एशिया ये यूरोपियन कंट्रीज है, वेस्ट यूरोप के अंदर कैसे एस्टेब्लिशमेंट हुआ, हाउ कॉलोनीज वर एस्टेब्लिश इन द एशिया, एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर यूरोपियन कंट्री ने कहाँ कहाँ पर अपने पावर एस्टेब्लिश किए। देखिए एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर देखा जाए तो, सो आफ्टर स्ट्रेंथनिंग द पावर्स ओवर इंडिया, वी नो दैट ब्रिटिशर्स हु अराइव्ड बिफोर द ब्रिटिश इन 1498 के अंदर पोर्टुगल, वास्को द गामा हु केम ओवर इंडिया विद डिस्कवरी ऑफ अ न्यू सी रूट, एंड पोर्टुगीज के बाद दूसरे वेस्टर्न जो ट्राइब्स थी वो इंडिया के अंदर आती रही। सो आफ्टर जो ब्रिटिश रहा है, ब्रिटिश ने ज़्यादातर रूल किया इंडिया के ऊपर। सो आफ्टर स्ट्रेंथनिंग द ग्रिप ओवर इंडिया, इंग्लैंड जो थे दे एक्सपांड द एम्पायर ओवर श्रीलंका, उन्होंने श्रीलंका कैप्चर किया, म्यांमार उन्होंने कैप्चर किया, सिंगापुर एंड मलेशिया, दिस कंट्रीज आर कैप्चर्ड, दिस वर द कंट्री विच कैप्चर बाय, किसने कैप्चर किया, कैप्चर बाय द इंग्लैंड। ओके, लेटर ऑन इंग्लैंड आल्सो एस्टैब्लिश देयर पावर इन चाइना, सो इंग्लैंड एस्टैब्लिश पावर ओवर इंडिया, श्रीलंका, लेटर ऑन दे मूव टुवर्ड्स द चाइना, उन्होंने वहां पर चाइना के अंदर भी अपना पावर एस्टेब्लिश किया। सो इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया एंड अमेरिका एस्टेब्लिश ऑयल कंपनीज इन ईरान, इराक, कुवैत, ओके, दीज आर द कंट्री, इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया, अमेरिका ने कहाँ पर कॉलोनीज बनाई, दे एस्टेब्लिश कॉलोनी इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया, बहरीन, ओके, ये जो वेस्टर्न एशियन कंट्री थी वहाँ पर उन्होंने बनाया कि ईरान जो थे वहाँ पर, सॉरी मिडिल ईस्टर्न कंट्री बोला जाए कि ये जो ज़्यादातर के ऑयल जहाँ से प्रोडक्शंस होता था वो वाली कंट्री के अंदर उन्होंने ये अपना पावर एस्टेब्लिश किया। इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड बहरीन के अंदर उन्होंने अपना पावर एस्टेब्लिश किया, एंड एफर्ट टू टेक केयर ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट हियर, दे एस्टेब्लिश देयर कॉलोनीज ओवर देयर। Colonialism in Africa, how they established the colonies in the Africa. So different African countries were divided among the European countries. So different African country, almost Africa जो पूरा कॉन्टिनेंट के अंदर जितने भी जो अफ्रीका जो था उसके अंदर, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर जितनी भी कंट्रीज थी ऑलमोस्ट सभी कंट्री के ऊपर यूरोपियन पावर एस्टेब्लिश था। So Dutch established the colonies for the first times at the end of 15th centuries in South Africa. Dutch जो people थे उन्होंने साउथ अफ्रीका कैप्चर किया। England and France established their colonies in Cape and Algeria in North Africa respectively. England and France ने भी वो कैप्चर किया। Later on, France established in colonies in Tunisia, Morocco, West African provinces के अंदर उन्होंने ये कैप्चर किया फ्रांस ने। So Italy captured the African provinces around the Red Sea. Red Sea के नजदीक वाला जो एरिया था वो इटली ने कैप्चर किया वो। So this was the answer of number 1. Now number 2 is explain the factors responsible for the First World War. What were the factors which responsible for First World War? जिसकी वजह से First World War हुआ. Okay, which were the factors responsible for the First World War? कि आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर 6 फैक्टर्स दिए गए विच रिजल्टेड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखते हैं। ओके, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगेन इन 1 अगस्त 1914। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई।
Okay, let's discuss this. Okay, France had to sign the Frankfurt Treaty with Germany. Okay, France and okay, Germany के बीच में एक वॉर हुआ जिसके अंदर फ्रांस हैड टू साइन दैट फ्रैंकफर्ट ट्रीटी विद जर्मनी. फ्रांस ओके फ्रांस हैड टू साइन दैट फ्रैंकफर्ट ट्रीटी विथ जर्मनी के सामने फ्रांस को ट्रीटी साइन करना पड़ा. फ्रांस की ओके सेडन वॉर हुआ और सेडन वॉर के अंदर फ्रांस की हार हुई और वो हार के बाद फ्रांस को जर्मनी के साथ ट्रीटी साइन किया. वो ट्रीटी को बोला जाता है फ्रैंकफर्ट ट्रीटी एंड फ्रैंकफर्ट ट्रीटी इटसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. नाउ द फ्रैंकफर्ट ट्रीटी इटसेल्फ वाज द कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. बहुत सारे दूसरे भी रीजन है, उसमें से फ्रैंकफर्ट ट्रीटी भी एक माना जाता है कि इट वन ऑफ द कॉज ऑफ अ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. नाउ मेनी मोर फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. इसमें फर्स्ट देखा जाए इकोनॉमिक फैक्टर. ओके इकोनॉमिक फैक्टर में तो देखा जाए तो in 19th century England having a vast empire Asia Africa and exploit the colonies and become richer. So England established a power over the Asian countries, African countries. They exploited those countries and become richer countries in the Europe continent. Europe continent के अंदर वो one of a richest country बना after establishing colonies over Asia and African countries. So the market of raw material needed by the England and France were in Asia and Africa. Okay, almost from the Asia and African country के अंदर से ये इंग्लैंड एंड फ्रांस जो थे वहाँ से रॉ मटेरियल लाते थे, मैन्युफैक्चर करते थे गुड्स को और फिर फाइनल जो प्रोडक्ट होता था दे यूज्ड टू सेल दोज प्रोडक्ट्स इन द अगेन इन एशिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज. So Germany started supplying cheaper goods. Now Germany started competition with England and France. England and France ने Germany के साथ competition किया. What Germany has did? Germany started supplying cheaper goods comparing to the England and France. Germany ने क्या किया? They started cheaper. उससे सस्ते goods उन्होंने सेल करना शुरू किया. So comparison to England and France which led to the first war. और दोनों के बीच में England and France उसके अगेंस्ट में जो जर्मनी था एक इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो थोड़ी इसकी वजह से जर्मनी ने चीपर किया, कंपटीशन हुई एंड दीज इकोनॉमिक फैक्टर्स जो ट्रेड वॉर था, ट्रेड वॉर बिगिन बिटवीन इंग्लैंड फ्रांस, इंग्लैंड वन साइड इंग्लैंड फ्रांस और दूसरी साइड जर्मनी. तो ये जो इकोनॉमिक वॉर हुआ, इकोनॉमिक ट्रेड जो था ट्रेड वॉर हुआ दैट लीड्स इनटू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. इकोनॉमिक फैक्टर एक ये. Then second number का जो Germany had started the competitions to the procure not secure the market in Asia and Africa. Asia and Africa के अंदर जर्मनी ने अपना मार्केट एस्टेब्लिश किया. जर्मनी के जो प्रोडक्ट आते थे वो इंग्लैंड और फ्रांस से सस्ते थे और उसकी वजह से ये ट्रेड वॉर हुआ फ्रांस और फ्रांस इंग्लैंड और जर्मनी के साथ में. सो ये एक ट्रेड वॉर की वजह से दैट इज ऑल्सो लीड्स इनटू द फर्स्ट वर्ल्ड एंड हेड लेड इनटू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. Militarism is one of the cause. Okay, military force were necessary and important for the competitions that European nations got into the for expansion. Okay, European countries were expanding their powers here, so military was important here. Military was important in European country. They expanding the power. They established a colonies over African countries, Asian countries के ऊपर अपने colonies establish. So militaries are required for the nations here for the security purpose. So compulsory military training started in Europe. So there were the countries in a European, what they did, they started military training. What compulsory military training? European country के अंदर बहुत सारी country थी जिन्होंने compulsory military training की शुरुआत की स्कूल के अंदर colleges के अंदर उन्होंने शुरुआत की. Now productions of weapons was increased under the pretext of self-defense here. Okay, even what they did, the production of weapons, weapon का productions increase किया. They increase weapons production in the pretext of on the excuse of what the excuse they make an excuse to for the self defense. They said for the self defense, for self defense we did the productions of a weapon का production उन्होंने बढ़ाया कि self defense के लिए. Thus militarism got an impetus, they got encouragement and created a serious atmosphere of a number of
weapons has been deadliest weapons which were produced in the European countries. Okay, more strong military training which was started in the European countries here. So they create kind of atmosphere of a war in the European countries, and these militarisms also leads into the cause, become the cause for the First World War. Now, third is a groupisms or secret treaties. Groupisms, European country made a groups, they started a secret treaties, they leads into the First World War. Okay. During that World War, durations of those time, the world was divided into two groups before the First World. First World War से पहले पूरे world जो था वो दो group में था. One side the group of Germany, एक side Germany था, Austria, Hungary, Bulgaria, okay, Turkestan. On the other side, एक side का group था, other side the group of England, France, Russia and Japan. ठीक है, दूसरी जो साइड था, okay, one side there Germany, Austria, Hungary, Bulgaria and तुर्किस्तान था. दूसरे साइड जो देखा जाए जो ग्रुप था जिसके अंदर इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया जो अलाइड नेशन से जाना गया, और जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी जो था ऑटोमन एम्पायर भी बोला जाता जो था विच कैम नोन एक्सिस नेशन. ओके, नाउ a feeling of jealousy. Okay, almost two group था, तो दो ग्रुप के बीच में jealousy, the feeling of jealousy, enmity, mistrust, fear, hatred and evolved between the groups here, between the two groups, between the allied nation, between the axis nations here, जो jealousy था, okay, enmity, mistrust, they do not have the trust over those nations here, they have the fear, hatredness was developed among the countries here, so between those groups, and these leads into the this situation leads into the First World War. So this become the important factor for the First World War. Okay, groupism. Second, fourth number I get feeling of a fierce nationalism. Fierce nationalism, strong nationalism started in those countries. Nationalism is a love for the nations here, and hatred for the other nation kind of a thoughts was developed in during the before the First World War. The independence of Belgium. Okay, independence of Belgium, Greece and unifications of Germany and Italy were result of nationalism. So unification of Germany and Italy. Italy and Germany ने unification किया था, or the trade or political unifications they have made here. और Belgium and Greece independence हुए थे, they result into the nationalism, and they strong nationalism was developed in those countries. Germany के अंदर, Italy के अंदर strong nationalism का development, Belgium, Greece के अंदर love for the nations and hatred for the other countries, the ideas was developed. So, economic jealousies, competitions and colonialisms European had increased so much that national interests of each other began to be clashed here. So economic jealousies, that trade related problems was began there, competitions were there, who can establish, who can procure the large market, the competition, and who can establish more colonies over the Asian African countries. They created problems in those countries, and उसकी वजह से नेशनल इंटरेस्ट था थोड़ा क्लैश होने की शुरुआत हुई थी वहां पर. So love for own nations and hatred for the other nations was encouraged. So in the countries like Germany, countries like Italy, so strong nationalisms were developed by the leaders here. So what the love for the own countries and hatred for the other nations, they were encouraged in these European country, Germany and especially Italy के अंदर ये ज़्यादातर हुआ था. So the feeling of war spread across the nations. So feeling of a war, पूरे country के अंदर feeling for the war spread, and it's Germany and it had resulted into the First War. ज़्यादातर Germany के अंदर हुआ, and this resulted into the First World War. Fierce nationalism, they also resulted into the First World War. Fifth number, role of a newspaper, print media जो था newspapers था. So newspaper of European nations arose much hatred. European nations, the article which was printed in a newspaper, they arose, they spread much more hatred among the peoples here. Hatredness, okay, love for the own countries, अपने country के बारे में अच्छा, दूसरी country के बारे में बहुत ही hatredness type का वो लिखते थे. Okay, the kind of writers, false writers, okay, जो लिखा जाता था न्यूज़पेपर के अंदर से, that create a hatredness among those countries, especially Italy and Germany के अंदर. So people with their provocative kind of provocative, exaggerated
provocative writings, which create a strong angers here, creating strong angers or strong reaction for the other countries. The kind of exaggerated, overstated writings were started, false write-ups by the spitting venom against rival nations. They were, whatever the write-ups, whatever the articles, okay, were printed in a newspaper. They were exaggerated, provocatives, creating more angers to the peoples or the citizens of the country. And these write-ups was spitting a venom और राइवल कंट्री, उसके दुश्मन कंट्री के सामने. And okay, number 6, philosophy about the war. What were the thoughts, ideas of a peoples, what they were thinking about the war, what were the philosophies of a war prevails in the European country. So was there, what was the thinking of the people? Policy of war is a welfare took place. War is a welfare. Which kind of a thought, which kind of a policies was took place there? War is a welfare. युद्ध ही कल्याण है, युद्ध के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है. That took root in a European countries. Okay, war is a needs of our countries here. So only mighty deserve to live. Okay, mighty, powerful, those who are the powerful, they deserve to live. So powerful है उसके रहने का अधिकार है. War alone is a national needs. Okay, war is one of the requirements of a countries. That kind of a concept, these kind of a thoughts was developed among the peoples of Germany. Especially ये जर्मनी के अंदर हुआ था. Strong nationalism जो डेवलप हुआ वहाँ पर. सो वॉर इज अ वेलफेयर, माइटी, दोज हु आर द माइटी मीन्स पावरफुल, दे डिजर्व टू लीव. वॉर अलोन इज अ नेशनल नीड. सच कंसेप्ट वर मेड पॉपुलर बाय जर्मनी के ज़्यादा स्प्रेड हुआ. एंड बाय एक्सप्रेसिंग दिस, okay, he tried to lead the minds of people of European countries towards the war. Now this Germany के जो लीडर थे, they leads this into the First World War. This mindset, this concept of a people that leads into the First World War. So these are the reasons which among that leads into the First World War. ये सब सिचुएशन थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले. यूरोपियन कंट्री के अंदर ये सब सिचुएशन थी जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ. मेंशन द इफेक्ट्स ऑफ अ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. वर्ल्ड वॉर के बाद जो इफेक्ट जो था, वर्ल्ड वॉर का जो इफेक्ट क्या था वो लिखना है. So destruction of man and material, we know that very well. War is not beneficiary for war. से दोनों का नुकसान होता है, दोनों कंट्री का ही नुकसान तो होता ही है. ऐसा नहीं कि दोनों को फायदा हो, ऐसा है ही नहीं. सो वॉर इज नॉट बेनिफिशियल फॉर एनी वन देयर. डिस्ट्रक्शन ऑफ अ मैन एंड मटेरियल दोनों जगह पर होते हैं. नो डाउट कोई जीत जाता है फिर भी नुकसान तो उनका होता ही है. सो डिस्ट्रक्शन ऑफ अ मैन एंड मटेरियल. ओके, how many people in this war? 6.5 crore people took part. European country के देखा जाए 6.5 crore people who took part. Out of that 1 crore people who died. Approximately numbers are given. Out of that 6.5 crore, so 1 crore people who died in the war. Battle के अंदर first of all 1 crore people who died. Okay, 2 crore were injured. 2 crore people were injured there. 70 lakhs were rendered permanently handicapped. 70 lakhs permanently handicapped. किसी का हाथ कट गया, पैर कट गया है. Okay, these permanently handicapped. And the total war expenditure was quite high. Expenditures, whatever they were spent, monies, properties they were lost into this First World War. Those European countries, there were the quite high. आप इमेजिन नहीं कर पाओगे इतना ज़्यादा था. It was a quite high. More number of people died because of starvations and other forms. Okay, starvation and other form की वजह से बहुत सारा death भी हुई because of starvation. Most of the people they were busy in main जो थे ज़्यादातर they were busy in the war. So factories का नुकसान हुआ, agriculture destroy हो गया, food की वहाँ पर scarcity हो गई. So that leads into starvations because of the number of people was the form of a killing and epidemics. उसके साथ epidemics भी spread हुआ. उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई वहां पर. Social changes. What was a change in the societies during the First World War? So during the war, since all the men of all the nations were on the war front, so all the men which were in the European countries, those countries who took part in the First World War, they were all in the war front. Somehow they were engaged in war activities, in productions or in war fronts, fighting somewhere. Now responsibility of families and occupation came upon the women. Now those who were the women at home, what she did then,
So women who started the responsibility of the family, take care of families, earning for the families here, occupations of the families, and that has been a lead by these women of the, okay. Okay, the self-confidence of the began to equivalent to the men enhance. Look, self-confidence of a women was developed because they came to know कि we also able to work like a man. वो भी आराम से business कर सकते, occupation कर सकते, खेत के अंदर काम कर सकते. They were equivalent to the men enhance during this First World War. Now, consequently, the demand for the women exercise their franchise. Franchise here means right to vote. Then later on, okay, women also exercise. We also had a right to give a word. Okay, that was raised after the First World War. Third number, the Treaty of Versailles. Okay, treaty was Versailles treaties was साइन की गई at the end of the First World के बारे में. So at end of the First World War, the unconditional surrender of Germany को surrender करना पड़ा in front of allied nation, in front of a allied nation, जो भी allied nation थे, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, रशिया, जो था उसके सामने उसको सरेंडर करना पड़ा. अलाइड नेशन, अलाइड में जर्मनी को सरेंडर करना पड़ा. So then the allied nations undertook the peace process in Paris. Allied nation के सामने peace process का establish हुआ कि how the treaties was signed. treaty की शुरुआत हुई, इसको treaty जो sign हुई उसको peace process से भी जाना जाता है. इन पेरिस के अंदर, ये कहाँ शुरुआत हुआ? पेरिस के अंदर. Now the agreement made with Germany during the Paris peace process was made in Mirror Palace at Versailles. So this treaty peace process जो था at the end of वो मिरर पैलेस एट वर्साइल सिटी का नाम है फ्रांस के अंदर. जो मिरर पैलेस था, लुइस 16 जो राजा था फ्रांस का, उसका मिरर पैलेस था, वहाँ पर ये हुआ और वहाँ पर ट्रीटी साइन की गई. जर्मनी को फोर्सफुली ये ट्रीटी साइन करवाया गया. एग्रीमेंट मेड विद जर्मनी ड्यूरिंग द पेरिस पीस प्रोसेस एंड मेड जर्मनी. ये ट्रीटी के अंदर ये जर्मनी वाज फाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. दस इस केम टू बी नोन एज अ वर्साइल ट्रीटी और इसकी वजह से इसको वर्साइल ट्रीटी से जाना जाता है. राइट शॉर्ट नोट्स. क्वेश्चन नंबर 2 जो है शॉर्ट नोट है कि 3 शॉर्ट नोट्स आर गिवन हियर. Russian Revolution. Okay, first is the Russian Revolution. So Russian Revolution is considered to be an important event in the world history, and it was also started First World War के टाइम पर ही हुआ था. So it also known as a Socialist Bolshevik Revolution. जो Bolshevik party थी who won this revolution. So political party के नाम से Bolshevik Revolution, ये Bolshevik Revolutions भी जाना जाता है. So people had dissatisfactions towards the Tsar. Those rulers, जो जार था, उसका राजा जो था, जार जो रूलर था रशिया के अंदर, peoples was dissatisfied. They do peoples of Russia, they are dissatisfactions towards the Tsar, the ruler of Russia. The Tsar was so cruel and pitiless on the people. जार जो था, रूलर जो था, वहाँ का जो राजा था जार, वॉज सो क्रूल एंड पिटीलेस, दयाहीन था. लोगों को उसके सामने कोई कंप्लेन करने के लिए जाता था तो पकड़ के उसको मार देते थे. कहीं पर उसको जेल में जेल में रखा जाता था. सो क्रूल एंड पिटीलेस ऑन द पीपल. रशियन फार्मर्स, लेबर्स एंड पीसन्स वर नॉट गेटिंग इनफ इनकम despite working very hard. If they are those Russian peasants, farmers, they were working very hard. After working very hard, they were not able to get income. उसकी जो इनकम थी बहुत ही कम रही थी डिस्पाइट वर्किंग वेरी हार्ड. दिस रशियन पीपल और जो भी थे फार्मर्स लेबरर्स थे वो. अंडर द लीडरशिप ऑफ फादर गेपन क्या शुरुआत हुई? अंडर द लीडरशिप ऑफ फादर गेपन, जो फादर था एक, उन्होंने क्या किया? ही टुक द लार्ज रिलीज वर टेकन आउट टू द जार रेसिडेंस विंटर पैलेस. विंटर पैलेस इज अ नेम ऑफ अ जार रेसिडेंस. जार का जो रेसिडेंस था उसका पैलेस का नाम था विंटर पैलेस. सो ही टुक द रिलीज, फादर गेपन हु टुक द रिलीज. वहाँ पर उस साइड वो शांति से पीसफुली दे वर डूइंग द रिलीज. रैली वहाँ पर वो निकल रहे थे. एंड जार्स आर्मी ओपन द फायर on these innocent people. So the Tsar's army, those innocent people who were with the Father Gapon, when they reached near to the Tsar's palace, so Tsar's army जो protection के लिए वहाँ पर थी, they opened the fire on innocent people, because of which thousands of innocent people were died.
जो रैलीज के अंदर जो भी थे, सो थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पीपल्स वाज डाइड इन दिस रैलीज। सो स्नो इन पिट्सबर्ग जो था, मतलब जहाँ का विंटर पैलेस जो था, पिट्सबर्ग प्लेस का नेम है रशिया के अंदर। द जार्स पैलेस वॉज सिचुएटेड टर्न रेड विद द ब्लड, जो वाइट कलर का जो वहाँ पर जो स्नो था, that become a red because of bloods of those innocent people when those army men who fired over innocent people, number of innocent people who died there, and these snow was there which was become turns into the red because of bloods of those innocent people, and these day were known as a bloody Sunday in the history. दिस डे, ये डेज को जो ब्लडी संडे इन द हिस्ट्री से जाना जाता है। So 22nd of January 1905 and it was a Sunday. 22nd of January 1900, 22nd of January टेक्स्ट बुक में दिया है कि 1905 and it was a Sunday. वो Sunday था, उसकी वजह से it was known as a bloody Sunday in the history. So large number of Russian got provoked. Okay, large number of people of Russian citizens, they become provoked, anger has developed among the people, they become angry. Okay, so in order to pacify the angry Russia become angry because of this bloody Sunday, this event there. Now to pacify, to calm down the Russians, the announcement to call of a Duma means a legislative assemblies of a रशिया की जो लेजिस्लेटिव असेंबली उसको डुमा बोला जाता है, एंड टू कम डाउन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ अ पीपल जार डिक्लेयर टू हैव द डुमा लेजिस्लेटिव असेंबली. सो ऑन 8 March 1917 ऑपरेस्ड वर्कर ऑफ पेट्रागार्ड कॉल फॉर अ स्ट्राइक हियर. उनके बाद असेंबली जो बुलाई गई, असेंबली भी वर नॉट सक्सेसफुल. देयर वर कॉन्स्टेंटली 3 डुमास वर कॉल्ड बट ऑल द 3 वर फेल्ड हियर बिफोर दे सेटिस्फाई द डिमांड्स ऑफ अ पीपल, ऑल फेल. उनके बाद क्या हुआ, on the 8 March 1917 oppressed workers of पेट्रागोड का जो वर्कर थे वहां पर, they went on a strike. क्या हुआ, so the workers went, workers of पेट्रागोड call for the strike, वो strike पर चले गए वहां पर. the Tsar sent his troops to control his event. now जार ने क्या किया, this जार जो था, they send this army to control the events in पेट्रागोड. जो पेट्रागोड के अंदर जो workers थे, they went on a strike, उसको कंट्रोल करने के लिए they send the army, but army refused to shoot these people. so army refused to shoot on those innocent people. एक बार आर्मी ने गलती की थी, they shoot on these rallies जो फादर गेपन के अंडर में जा रही थी, but here army refused to shoot on innocent people. और इसके साथ रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है. and after that fall of जारडम्स, इसके बाद जार जो रूलर था, पावरफुल जो था, जारडम्स वाज फुल, द पावर फेल इनटू द हैंड्स ऑफ अ कार्नेस्की. द मेंशेविक ग्रुप था, मेंशेविक पार्टी जो थी उसके हाथ में पावर आया, जारडम के पास मेंशेविक ग्रुप के अंदर पावर आया. लेटर ऑन देयर वाज सम मोर. लेनिन जो था, थिंकर जो था रशिया का, बिलीव इन द इम्पोर्टेंस ऑफ लेबरर्स एज अ प्रोपागेटेड बाय कार्ल मार्क्स. कार्ल मार्क्स ने जो थियरी दी सोशलिज्म, कार्ल मार्क्स की थियरी सोशलिज्म थियरी है. लेनिन जो था वो बिलीव करता था सोशलिज्म के अंदर, कार्ल मार्क्स की थियरी के ऊपर बिलीव करता था. सो नाउ लेनिन इंस्टिगेटर बोल्शेविक जो थे, बोल्शेविक एंड मेंशेविक, दो अलग अलग ग्रुप थे वहाँ पर. जो मेंशेविक था उसके साथ अगेंस्ट में उन्होंने प्रोवोक किया, इंस्टिगेट किया बोल्शेविक पार्टी को. बोल्शेविक जो लिबरल पार्टी ज़्यादातर थी, उनके बिलीव करती थी बोल्शेविक, एंड दे थॉट दैट ऑल द इनकम्स ऑफ पीपल इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल हियर. सो दैट दे अगेंस्ट द मेंशेविक डिक्लेयर द फाइनल रेवोल्यूशन एंड गॉट द रेन्स इन द हैंड. एट द एंड ऑफ द रेवोल्यूशन, फाइनली बोल्शेविक गॉट द पावर्स ऑफ रशिया. बोल्शेविक जो पार्टी थी, जो कार्ल मार्क्स के थॉट्स पर चलती थी, उसके पास में ये पावर आया. सो इसकी वजह से रशियन रेवोल्यूशन को बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी जाना जाता है. कम्युनिस्ट सोशलिस्ट बोल्शेविक रेवोल्यूशन, इसको बोल्शेविक रेवोल्यूशन से भी जाना जाता है, रशियन रेवोल्यूशन को. द इवेंट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, शॉर्ट में है, बहुत ज्यादा लॉन्ग में नहीं. इवेंट्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर क्या क्या हुआ उसके बारे में पूरा. तो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 24 नेशंस सपोर्टेड अलाइड नेशंस. द ऑलमोस्ट वर्ल्ड वॉज डिवाइड इन 2 ग्रुप में था. अलाइड नेशंस था
एंड एक्सिस नेशन था। उसमें 24 कंट्रीज वॉर विद द 24 कंट्रीज सपोर्टेड अलाइड नेशन। अलाइड नेशन ब्रिटिश, फ्रांस, रशिया, इटली, यूएसए, ये जो था अलाइड नेशन के अंदर था। और 4 नेशन सपोर्टेड एक्सिस नेशन। एक्सिस नेशन जर्मनी पावरफुल था, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ऑटोमन एम्पायर, ये सब कंट्रीज जो सी एरिया जो कंट्रीज थी दे वर विद द एक्सिस नेशन। Now Germany initially ruined the French army. So initially in the beginning of the First World War, German country was a powerful and they destroyed the France की army को, French की army को उन्होंने destroy किया। Germany initially ruined the French army. It fought many submarine war में वो powerful थे and destroy the ships of allied nation की बहुत सारी ship को उन्होंने destroy किया। जर्मनी के पास जो टेक्नोलॉजी थी उसकी वजह से सबमरीन के पास था उनके, से destroyed ships of the allied nation. So Germany was very strong and this time it managed to draw the American, so स्ट्रॉन्ग था उनका अमेरिकन स्टीमर लुसिटानिया था। लुसिटानिया उसका स्टीमर का नाम था, जिसके अंदर 140 अमेरिकन सोल्जर्स वाज डेड। ओके, जर्मनी अटैक ओवर द अमेरिकन स्टीमर लुसिटानिया एंड जिसके अंदर 140 अमेरिकन सोल्जर्स वाज डाइड। तब तक अमेरिका वॉज अ न्यूट्रल, अमेरिका वॉज अ न्यूट्रल, इनिशियली वो न्यूट्रल था, उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया था। बट आफ्टर द अटैक ऑफ जर्मनी ओवर अमेरिका दे सपोर्टेड टू द, उन्हें इंग्लैंड एंड फ्रांस को सपोर्ट किया। कॉन्सिक्वेंटली अमेरिका जॉइन द अलाइड नेशन फॉर द वॉर इन अप्रैल 1917। अमेरिका वॉज अ पावरफुल था, कंट्री था वेपन के हिसाब से भी, सो 1917 में सपोर्ट किया। With the countries like Panama, Greece, Cuba, China, Siam joined the allied nation. Thus allied nation become a more stronger. With the अमेरिका के बाद में ये सब कंट्री थी, they also supported the allied nation. Now German army could not withstand again the troops. Now the scenarios of a first world was totally changed with the joining of America in allied nations जो था that totally वो change हो गया। अमेरिकन ट्रूप्स के सामने जर्मन आर्मी जो थी वो टिक नहीं पाई एंड पोजीशन ऑफ अ वॉर टोटली चेंज। जो जर्मन जीतने वाला था वैसी सिचुएशन थी, जर्मन वॉज स्ट्रॉन्ग, जो पावरफुल था वो पूरा चेंज हो गया। And Germany surrendered to the allied nation at the end of the First World War. Germany who surrender की allied nation के सामने and signed the ceasefire treaty, the Treaty of Versailles, जो जाना था ceasefire treaty, and war came to an end. War came to an end with the signing of a Versailles treaty. Third, now aims of a League of Nations, a League of Nations which was established after the at the end of the First World War के बाद में शुरुआत हुई। So उसका aims क्या था? The horror of a First World War explained the absolute necessity of world peace of the nations of the world. Okay, these horrors, what were the destructions in the First World War? So it was decided in a Treaty of Versailles we must have the one international organization which keeps the peace among the countries here. So there was a absolute necessity to have the one international organization which provide a peace over the world. Now what were the aims was there? Main to maintain the international peace and security, main purpose to establish a peace and security over the countries here. War जैसा first world war हुआ ऐसा ना हो वैसी situation. Now every nations to respect the unity and integrities of a nation. So every countries must have accept the unities of a countries, the integrities of the nations here. दूसरी okay. Third number, to give up the policy of a war. War is a welfare which was set up to give up the policy of a war. पॉलिसी ऑफ वॉर को गिव अप करना है। फोर्थ नंबर, टू डेवलप इंटरनेशनल रिलेशन, टू हैव द गुड फ्रेंडली रिलेशंस विद द कंट्रीज। फिफ्थ नंबर, टू सॉल्व द इंटरनेशनल डिस्प्यूट पीसफुली थ्रू द negotiation or mediation. Look at, if both the country has a problem, the problem could be solved with the peace, okay, with the mediations of this allied nation, League of Nations के थ्रू सोल्व किया जा सकता है पीसफुली। नेगोशिएशन, उसके सामने बातचीत करके बैठ के प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाए, नहीं कि वॉर के थ्रू। नाउ इफ एनी नेशन इग्नोर दिस लीग ऑफ नेशंस इट्स और इट्स मीडिएशन, सो इट विल बी डिक्लेयर एज अ रिबेल नेशन, उसे माना जाएगा इफ दे डू नॉट एक्सेप्ट द नेगोशिएशंस ऑफ अ लीग ऑफ नेशंस। सो 6 एम्स जो थे लीग ऑफ नेशन के। नाउ गिव रीजन।
So League of Nations was established after the First World War. What are the reasons here why it was established after the First World War? So horror of the First World War explain the absolute necessary. We know that the destruction of man materials was what was destroyed there. A number of people who died, properties there, नुकसान हुआ. उसकी वजह से there was absolute necessity of a world peace of the nations of the world, and for this need for an international organization. So एक ऐसा organization होना चाहिए world के अंदर which can control these war activities. So it became necessary to think actively and immediately about a world peace. So उसकी वजह से the League of Nations was formed in 10th January 1920 के अंदर 10th of January 1920 League of Nations was founded. Second number, 22nd January 1905 is known as the Bloody Sunday of Russia. Russian Revolution का short note में हमने ये discuss किया, उसमें से ये answer है. So under the leadership of Father Gapons, large rallies was taken out to the Tsar residence, Winter Palace जो था 22nd January. These peoples were unarmed, while some had a Tsar's pictures in hand, captions like a long live. Long live little lords of Russia was written. So those people who was carrying a release was they are carrying a pictures. In the pictures they made a captions के अंदर क्या लिखा था उन्होंने, long the like a long live little white lord of Russia. They praised the Tsar ordered to fire over the innocent people. Now Tsar's army opened the fire on these innocent people, because of which thousands of innocent people died, and these on Petersburg's where the Tsar's palace were situated turned with the white blood, with the bloods. So turn red with the blood. So okay, turn red आएगा यहाँ बीच में वहाँ पर red with blood. ए टर्न जो है यहाँ पर रेड आएगा, रेड विथ ब्लड. ओके, दैट जार का जो पैलेस था वो रेड कलर का हो गया, जो पैलेस के बाजू में जो स्नो होता है दैट बिकम रेड. सो ए टर्न रेड विद द ब्लड्स ऑफ दोस इनोसेंट पीपल. सो दिस नोन एज अ ब्लडी संडे. यहाँ पर एक रेड ऐड कर देना, टर्न रेड. ओके, ये जो है टर्न के बाद रेड आएगा. ओके, रेड विद ब्लड. सो दिस डे इज नोन एज अ ब्लडी संडे. Now these are the MCQs of our textbook. Okay, number 1, in which treaty was the seed for the First World War sown? Okay, which treaties were responsible for the First World War, जिसकी वजह से First World War की शुरुआत हुई, ऐसा भी था. So Frankfurt Treaty. A Frankfurt Treaty itself was responsible for the First World War, and Treaty of Versailles are also responsible for the Second World War here. So Frankfurt Treaty, humiliation of France जो हुआ, that leads into the First War, seeds for the First World War. Second number, which treaty was signed, इसमें Frankfurt, which city was signed at the end of the First World War? At the end of the First World War जो कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी? ट्रीटी ऑफ वर्साइल. सो जिसमें जो आंसर आएगा ट्रीटी ऑफ वर्साइल. एंड विच प्रोविंसेस डिड फ्रांस लूज विद द फ्रैंकफर्ट ट्रीटी? जो फ्रैंकफर्ट ट्रीटी के सामने कौन से प्रोविंसेस जो थे वो फ्रांस ने लूज कर दिए? ओके, फ्रैंकफर्ट ट्रीटी में जर्मनी को देने पड़े. अल्सेस एंड लॉरेन, दीज आर द प्रोविंसेस. अल्सेस एंड लॉरेन जो प्रोविंसेस थे वो देने पड़े इनको. सो दीज आर द आंसर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव. एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव्स वीडियोस विल बी अपलोडेड लेटर ऑन. तो फर्स्ट सी, सेकंड ए, थर्ड सी. Okay, hope you like these videos. And okay, these are the textbook exercise solution. If you have any queries, you can send me email. You can also send me in the video comments. Okay, और दूसरे चैप्टर के वीडियोज यहाँ पर अपलोड होते रहेंगे. So if you are not subscribed to the channel, subscribe and share with your friend. Thank you.